गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ दिव्या। मैं विकास और हम हैं बेफिक्रे। और आज है हमारा बाकू में डे 2 और हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने। एंड इट वाज अ रियली नाइस। वी आर ऑन द 11th फ्लोर और 11th फ्लोर से जो व्यू है इस रेस्टोरेंट का बहुत ही अमेजिंग है। और हमारे होटल में पैकेज में ही इंक्लूडेड है ब्रेकफास्ट। यस, द ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडिंग एंड द शेफ वाज अमेजिंग। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है और उनसे भी मिलाएंगे आपको। लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम अमेजिंग व्यू। यस, ये है जो व्यू जिसके बारे में बात कर रहा था। लुक एट दिस early morning view with the Caspian Sea, beautiful mount, the rays which is coming from the clouds. Let me zoom a little bit so you can understand what I am trying to speak. Beautiful. Azerbaijani type of breakfast. Yes. So we have a, let me show you. These are the jams, brother. Jam. These are the different types of jams. And what is this? This is also jam? Yeah, apples. Apples? Apple jam. Okay. Oh, wow. So we have a multiple type of jam. We have a pomegranate and fruits. Pomegranate is very famous in Yes. Azerbaijan. And we have a lot of fruits. Apples, green apple, oranges and golden apple. And I think this is a baklava. Cookies. Cookies. Okay, this is cookies. Yes. And this is also cookies. And some cutting fruits and famous tomatoes. And I think this is a teapot. Teapot. Yeah. This is a typical teapot from where you can pour a hot tea. And the coffee machine is also there. Come on. Oh yeah. Omelette. Yes, thank you. Okay. Yeah, thank you. So we have a chef with us. Say hi. Hi. Okay. Thank you. This is a report. We have a YouTube channel actually. Understood. Where are you from? We are from India, living in Kuwait. Understood. Too much people around from India. Ah, Yeah, our country is also poor. thank you. Exactly. Okay, go ahead. We have a boiled eggs and we have a rice and some vegetables and side dishes, huh? Thank you. Thank you. Come. Oh, thank you. Shoot. Actually, I don't want to teach you. Okay. Exactly from India. This is the tea. Ah. This is nice idea. You know, take it garbage, pack and sell. But this is leaf tea. This leaf Okay. tea, The you leaf know tea. it. Yeah, the leaf tea And same. this is hot milk. You like it. actually. This England style. Ah, yeah, yes. No, it came from England. Yeah. You make it some little ginger, blah, blah, blah. But why not? और आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। इट वॉज रियली नाइस। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है और जो शेफ़ है वो तो यहाँ के लाजवाब है। उन्होंने हमारे लिए हमारे जिस तरीके से हमें चाहिए टेस्ट का वैसे ही हमारे लिए ऑमलेट बनाया एंड स्पेशल हॉट पैनकेक्स बनाए। सो ये चीज़ देख के काफ़ी चीज़ उन्होंने हमारे लिए कस्टमाइज़ करी जो जो हमें चाहिए था। तो बहुत ही मज़ा आ गया भाई। सुबह सुबह आपको अपना एक पर्सनल शेफ़ मिल जाए तो क्या कहने ब्रेकफास्ट के लिए। इट वॉज अमेजिंग। लेट्स टेस्ट दिस। और हमारी चाय अभी अभी आ रही है। सो अज़रबैजानी चाय के साथ और जैम के साथ अपने सुबह का नाश्ता शुरू करते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड आवर सिटी टूर एंड हियर इज़ आवर फ्रेंड रामी एंड Hello everybody. So he is a guide for today and hope this tour will be very nice and we will covering full Baku with our friend Rami. So let's go. Thank you. And Rami told us that Azerbaijan means land of fire and Baku means the city of wind.
So very interesting facts has been given by Mr. Rami. So as the video goes on, we will tell you more interesting fact about the country. And now we have reached to the Nizami Street. आज हम आपको दिखाएंगे मॉर्निंग व्यू फ्रॉम निज़ामी स्ट्रीट. Yeah, this is a most touristic spots. तो अपना जो टूर का जी स्टार्टिंग होने वाली है वो यहीं से होने वाली है. होप आप लोगों ने हमारा नाइट व्यू निज़ामी स्ट्रीट का देखा होगा. अगर नहीं देखा तो डेफिनेटली हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, लेटेस्ट वीडियो में जाएं और देखें निज़ामी स्ट्रीट. So this is the morning look of the street, and if you are familiar with my second video, you can the same place in the night look gorgeous. The lights are amazing, the people are marvelous, and you can find a lot of shops with most of the brands. So morning it's look totally different. Wow, these are the really, and you can see this most of the shops is having a sale. You can see 50% sales, 75% sales, and they have a really lovely cute cafes. नहीं अभी तो नहीं, तो मैं तो ऐसे वीडियो ले रही थी बस. Yeah, that we can see, because when we meet the Zardani people, they greet you very warmly. They help you whenever you need their support. Yeah, of course, they will help you. Now we are going to the old city. तो आपको लेके चलते हैं ओल्ड सिटीज़, और ओल्ड सिटी की वॉल मुझे सामने से दिखने लगी है, और निज़ामी स्ट्रीट के पास ही में है. अब नेक्स्ट स्पॉट होने वाला है, हम ओल्ड सिटी को एक पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं. Nizami Ganjavi is a very famous Azerbaijani poet from 12th century. He had 5 poems, big poems, which called Khamsa. 5 means he is also author of the famous Leyla Majnun, the most famous author of Leyla Majnun in the east. Here is you can see his monument. So he is the one who has written the Laila Majnun story. Leyla Majnun story, yeah. Leyla Majnun became famous because of him. Oh. He wrote. He also had some other 4, poems, big poems. Farhad and Shirin, also Treasure of Secrets, and Iskandar Nama. And also on this side you can see famous Azerbaijani poets and poetess from different centuries. For example, first one is Muhammad Fizuli, second one is Molla Pənah Vaqif, Mirza Fətəli Axundov, and the woman Xurşid Banu Natəvan. Xurşid Banu Natəvan was ruler of Karabakh. Now we are going to the old city. This is a gate to enter the old city. This is called a double gate. So Double gate, okay. Old city from 12th century. But firstly from 12th century. But some parts are renovated also from 15th, 16th, 17th centuries, different parts. Salam versin. Uşaqlarla böyle. Kimi var? अज़रबैजान जो है ये एक इस्लामिक कंट्री है, जहाँ पर लगभग 85% इस्लामिक लोग रहते हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं. सो स्टिल ये काफ़ी ओपन कंट्री है, एंड काफ़ी वार्म वेलकम करते हैं लोगों का. ये चीज़ इनके कल्चर में अच्छी तरीके से देखी जा सकती है. अज़रबैजानी जो लोग होते हैं बेसिकली दे आर फ्रॉम टर्की. तो उनका रहन सहन, उनका खाने पीने का जो स्टाइल है आपको टर्की से काफ़ी रिजेंबल होते हुए मिलता है. और जो अज़रबैजान है वो पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था. उनको
अगर देखा जाए तो इतना टाइम नहीं हुआ रशिया से आज़ाद हुए हुए, तो नाउ दे आर गेट फ्री। तो अब ये कंट्री को बना रहे हैं काफ़ी मॉडर्नाइज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसी बिल्डिंगें जो आपको रशियन एरा के बारे में दिखेगी, और कुछ मॉडर्न बिल्डिंग्स जो आजकल बन रही है। तो एक मिक्स ऑफ कल्चर है, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिखता है, और अपनी हिस्ट्री को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से इन लोगों ने प्रिजर्व भी कर रखा है। और अभी हम आ चुके हैं एक आर्टिस्ट के घर के पास। यू कैन सी एयर कंडीशन वॉल पे भी, देखिए बिल्कुल लॉयन फेस लगेगा आपको। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट पीस बना रखा है। इट्स रियली अमेजिंग। डोर या So let's go inside. Hello. yeah. Hi. Beautiful, huh? He's the one who made all this. Wow, Wow. amazing. He is the man behind this wall painting. Yes. Amazing. किले की दीवारों पे आप ये तोप देख सकते हैं जो उस टाइम पे किले की रक्षा के लिए लगाई जाती थी। अज़रबैजानी लैंग्वेज में भी इसे तोप कहा जाता है, तो हमारे हिंदी भाषा में भी इसे तोप कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और आज मौसम अच्छा खुला हुआ है, सो बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड देयर आर लॉट ऑफ कैफ़ेज़, सो यहाँ पर आके आप आराम से चिल करते हुए इस पूरी जगह को देख सकते हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, सो यहाँ का आइकॉनिक टावर, फ्लेम टावर जिसे बोलते हैं, वो दिखने का शुरू हो जाएगा। सो ये देखिए, एंड ये देखिए, वाओ, रियली नाइस। और अब हम जा रहे हैं पैलेस के अंदर, सो लेट्स गो। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है फ्लेम टावर्स का, सो उसे देखते हुए अब चलते हैं पैलेस के अंदर। सो लेट्स गो। आओ। Wow. There is a little yard there for walking. Also, scientists have been, some kind of laboratory there. So this is the Palace of Shah. Yeah, Palace of Shah Shirvan. This whole area is called Shirvan. Sherwani. Let me tell you one fact which we just came to know. The Sherwani which we used to wear in our wedding is invented or given by the... Yeah, it's transferred to India by people who went to India from here, Shirvani. Also, you can check it in Wikipedia. Oh wow! This is the latest facts which we are come to know from our special guide Rami. की जो हिस्टोरिकल चीज़ अगर आप देखते हैं और यहाँ से मिलती है, तो आपको पता लगता है कि जो हम लोगों के कल्चर है वो काफ़ी मिले जुले हैं। और ये सारी कंट्री पहले जैसे कि सिल्क रूट पे आती थी, सो उसके कारण काफ़ी चीज़ें जो पता लग रही है वो काफ़ी अमेजिंग है। एंड इट्स रियली नाइस। अगर आप लोग इस तरीके की हिस्टोरिकल चीज़ देखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप अज़रबैजान का टूर लीजिए। हमारे पास जो आप पता ही है आपको, ट्रैवल ऑन इज़ कुवैत एजेंट, जहाँ जिन्होंने हम लोगों का ये ट्रैवल जो पैकेज है अरेंज किया था, तो आप लोग भी उनसे ये पैकेज ले सकते हैं और इस टाइप की जो सर्विसेज आपको ही मिलेगी, और अमेजिंग पैकेज है इनके पास। Now we are going to a museum of very small books. Now we are going to a museum of very small books. This is the only museum around the world जहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी बुक्स रखी गई है। चलें, look at the size of the books यार, they are really small भी नहीं, tiny बोलेंगे इसे तो। और बहुत सारी बुक्स है
जिनको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लाके यहाँ पे रखा गया है। वाओ, ये छोटी सी, देखो ये बॉटल के अंदर है, छोटी सी बॉटल उसके अंदर। वाओ, ओह, so we can also see the Indian author books. Oh, Hanuman Chalisa. Wow, यार। This one I think also in Sanskrit. Yes. Wow. Look at these books. एंड पूरी दुनिया से ऐसी छोटी छोटी बुक्स को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद इस म्यूज़ियम में रखा जाता है ना, ये अमेजिंग चीज़। और ऐसा टाइप का जो म्यूज़ियम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको इस टाइप का म्यूज़ियम देखना है तो यू हैव टू कम टू द बाकू एंड एक्सप्लोर दिस म्यूज़ियम। इट्स रियली नाइस। कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिले जो दुनिया में एक ही हो, दूसरी हो ही ना, तो बहुत ही अच्छा और अद्भुत लगता है। So this place also came into the Guinness Book of Record. You can see they are one of the greatest poet of Azerbaijan, and he has written a lot of amazing poem. And as my friend told, like he's against talent, and his most of the poem is depicting the harsh cruelty which was done by the Stalin. Come, please take. Who were killed by Stalin. So from the back you can see the portrait, the sculpture is already depicting the strength of his poem. Whatever he has written in the poem, you can see all the pain, all the things of that era can be seen in this one perfect statue. Beautiful and marvelous. और आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हो। वाओ, दिव्या